After Kirchhoff's laws, next point in unit number 5 is the superposition theorem. Okay. Now this theorem is also used for to solve the linear bilateral network. Okay, ध्यान में रखो, these theorem is used to solve the linear bilateral network. Now statement is the superposition theorem states that in any linear network containing two or more sources, the response, what is meant by response, the current in any element is equal to algebraic sum of the responses caused by individual source acting alone while the other source are inoperative. Okay, now you will get the meaning of this statement when you see the procedure. Okay, now before that you must know what are the steps we have to follow in the superposition theorem, because the question may be based on this theory part or maybe the numerical, means they can ask you explain the steps and statement in of the superposition theorem. Okay, now we will see the first procedure. ठीक है, if you observe the circuit is having two sources V1 and V2. Okay, and resistances are R1, R2 and R3, and the question is find the current flowing through R3 by using the superposition theorem. ठीक है, now if you observe the current is IL, current कितना है IL, and we have to find by using superposition theorem. ठीक है, if they ask you by using Kirchhoff's law, it will be simple. You will consider loop 1, loop 2, and you will get I1 and I2, then you will calculate this middle current. But in this case we have to follow the superposition theorem. ठीक है, as per the statement, first consider single source acting alone while the another source is short circuited. Okay, in this case consider V1 is acting alone and V2 को क्या किया, short circuit किया. Now there is no need to explain what is meant by short circuit, because in basic notes I already provide you what is meant by short circuit and what is meant by open circuit, and also shared video of that. So V1 is acting and V2 is short circuited. Okay, so your circuit will be like this. Now this current will not be IL, जो ओरिजिनल करंट IL था, नाउ दैट विल बी सपोज IL डैश, उसको क्या कंसिडर करते हैं, IL डैश. ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 में IL डैश फाइंड आउट करो. नाउ हाउ टू फाइंड दिस, कैसे फाइंड करना है, दैट वी विल सी इन द न्यूमेरिकल. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, फाइंड IL डबल डैश ड्यू टू V2 सोर्स अलोन वाइल V1 इज शॉर्ट सर्किटेड. ओके, सी इन दिस केस V2 को एक्टिव किया एंड V1 को शॉर्ट किया. नाउ फाइंड, सो इन दैट केस करंट विल गेट चेंज, ये IL डबल डैश हो जाएगा. करेक्ट, फर्स्ट केस ओरिजिनल करंट IL था, V1 की वजह से IL डैश हो गया एंड बिकॉज ऑफ V2 इट इज़ IL डबल डैश. ठीक है, नाउ इट इज़ द अल्जेब्रिक सम. स्टेटमेंट क्या बताता है, इट इज़ द अल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स व्हेन सोर्सेस आर एक्टिंग अलोन. Now in this case the total current IL is IL dash plus IL double dash. Now see what is the meaning of algebraic sum. In case of current, the direction of flow of current is very important. Correct. So in this case, okay, यहाँ पे देखो ओरिजिनल सर्किट में V1 एंड V2 यहाँ पे है. ओके, व्हेनेवर यहाँ पे V1 का पॉजिटिव टर्मिनल अपर साइड में, नेगेटिव लोअर साइड में, यहाँ पे V2 का पॉजिटिव अपर, नेगेटिव लोअर, एंड हमें चाहिए करंट R3 का. सो इफ़ यू कंसिडर करंट ड्यू टू V1, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. करेक्ट, मीन्स ऐसे फ्लो हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स इन रेजिस्टेंस R3 दोनों सोर्सेस की वजह से जो करंट आ रहा है बोथ आर इन सेम डिरेक्शन, मीन्स नीचे जा रहा है. दैट मीन्स बोथ आर इन सेम डिरेक्शन, सो देर विल बी एडिशन. करेक्ट, सपोज अगर ये सोर्स उल्टा होता, ओके, सपोज दिस सोर्स विल बी ऑपोजिट इन डिरेक्शन, देन इसका करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड आता और बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड टू डाउनवर्ड डिरेक्शन. सो in that case there will be a subtraction. ठीक है, so while finding the final answer you must check what are the direction of current, means whether it is to be added or it is to be subtracted.